So guys, welcome back and today my camera is off. So guys, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट 1 तक मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको टिल द डी के बासु गाइडलाइंस एंड मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया था जो हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच आर लेफ्ट उसका पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रादर अंडरस्टैंड. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं FIR एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. Please mark it specially very important. ये वाला जो ऑरेंज बॉक्स में है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पेपर में इसका जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आ सकता है. सो नाउ व्हाट इज़ FIR? It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigation into the crime. The law states that it is compulsory for a police officer in charge of police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offence. This information can be given to the police either orally or in written. The FIR usually means the date, time, and the place of the offence, details the basic facts of the offence, including a description of the events. So, what is actually FIR? देखो, FIR means फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड एज द नेम सजेस्ट मतलब कि जो भी विटनेस है जिसने सबसे पहले क्राइम होते हुए देखा है ही वुड हैंड इन द इंफॉर्मेशन फर्स्टली टू द पुलिस. सपोजिंगली जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था एक बार जो पार्ट 1 में एग्जाम्पल दिया था कि सपोज एक पर्सन की गाड़ी चोरी हो गई. So he's the witness here. He'll go to the police station. And although it's not a very heinous crime as if murder, but still it is a big crime. Stealing a car and maybe a very expensive car. So he'll go to the police. He'll ask the police to lodge in his FIR. He'll tell the time. He will tell the time when the car got disappeared. He'll tell the venue, the place where he kept his car, he parked his car. He saw a person stealing it in front of him, but he was maybe wearing a mask, so he'll tell the description of the person. He'll tell the description of the crime scene. He'll tell everything, and that is written in the FIR, that is first information report. The basic facts are basically given, and also if known, the identity of the accused person and the witnesses is also mentioned. तो अगर जैसे मैंने बोला कि विटनेस को पता है, उसने देखा है अपने सामने किसी को चोरी करते हुए, but maybe he was wearing a mask, maybe his hair were too long, maybe he was completely covered that he was not able to see who he actually was, so he'll tell a description. and तब क्या होता है description, तो पुलिस ऑफिसर एक आर्टिस्ट को बुलाता है. वो क्या करते हैं, वो ड्राइंग बनाते हैं. जब वो डिस्क्रिप्शन बताएगा विटनेस, सो हील ड्रॉ, एंड जो सबसे ज़्यादा मैच करता है तो उसको पुलिस मतलब ऑफिस में बुलाया जाता है, स्टेशन में. ठीक है. सो द FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट. There is a prescribed form in which the police registers an FIR and it is signed by the complainant. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. So the complainant witness also has a right to get a free copy of the FIR. So this is what is FIR. ठीक है. Now public prosecutor, as you all know, public prosecutor is a very important person. He represents the public. ठीक है. He represents the public. He represents the state. He is hired by the state government. A criminal offense is regarded as a public wrong. So, as I told you in the previous video, that a criminal offense, whenever a person commits a crime, regardless of it is a heinous crime, it's a cognizable crime, it is a soft crime, मतलब बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा मोटा crime है, maybe pickpocketing or something, regardless of whatever, the crime is not only committed against the victim, rather it is committed against the whole society. It is a public wrong.
What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole. Do you remember of the case of the dowry death of Sudha that we read about in previous chapter? तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था सुधा की डेथ के बारे में. डाउरी डेथ जब हर मदर इन लॉ एंड हर हस्बैंड बर्न्ड सुधा बिकॉज ऑफ डाउरी, मतलब दहेज के कारण उसको जला दिया गया था सुधा को. तो क्या था उसमें था कि एंड लक्ष्मण द अक्यूज्ड लक्ष्मण था एंड हिज फैमिली वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट. एंड यू नो हम जब भी ऐसा होता है तो पब्लिक इट इज़ लाइक द स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम या फिर द स्टेट ऑफ द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार. ठीक है, तो कंप्लीट स्टेट अगेंस्ट हो जाता है किसके? द अक्यूज्ड. दैट्स व्हाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नीड्स टू कीप हिज फैक्ट्स to be impartial. He rather needs to focus on every single detail and the evidence. He needs to hear his opposition as well, and then he needs to reply back. He needs to oppose that. Somehow he needs to win the case, right? So in the courts, it is the public prosecutor who represents the interests of the state. The role of the public prosecutor begins once when the police has conducted the investigation and they had filed a charge sheet in the court. As you know, when the police sign a charge sheet in the court, it is their responsibility. It is a very important responsibility of the police officers, and it is a law actually that the charge sheet should be presented in front of whom? The accused. उनकी एक राइट है कि हाँ जो अक्यूज्ड है उसके सामने वो चार्ज शीट प्रेजेंट करेंगे और वो देख सकता है, राइट? सी, he or she has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. तो prosecutor की ये ड्यूटी है. So what is the you can be asked this question, very important sort of question actually. Very important question that what is the role of the public prosecutor? So the role of the public prosecutor is that he needs to conduct his prosecution against who? Against the accused impartially. He needs to perform his or her duty impartially. Impartially मतलब कि बिना किसी भेदभाव के, right? Impartially मतलब no partiality between the witnesses, the accused and whatsoever. And he or she needs to present all the facts, all the true facts rather, all the materialistic facts of the witnesses and all the evidences he has got, and before the court. And then the court, finally the judge decides whether the person is to be guilty or he is rather innocent. Now next come the most important. As we know, the judge is the umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court, right? तो जज क्या करता है? उसकी जज की ये एक ड्यूटी है that he needs to conduct the trial impartially and in an open court, in public view. ऐसा नहीं है कि वो चुपके चुपके उसने सारी मतलब अपना डिसीजन ले लिया, he told her yes whether the person is guilty or not. No, in an open court, in public view. The judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense. The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law. तो जज की ये ड्यूटी है कि वो डिसाइड करेगा कि हाँ जिस पर्सन ने ये पर्सन ने क्राइम कमिट एक्चुअली किया है, क्या वो गुनहगार है या फिर ही वो इनोसेंट है, उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, रादर एंड ही इज़ बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड. तो ये जज की ड्यूटी है वो डिसाइड करना. And in accordance with the law, he'll also and if the accused is convicted. Now what do you mean by convicted मतलब he has been proven guilty, उसको गुनहगार साबित कर दिया गया है. So what he'll do, he'll according to on the basis of law, he'll tell the sentence of the person. Like he may send the person to jail
or impose a fine, or both, depending on what the law prescribes. Supposingly it's a murder. So murder में क्या होता है? फांसी. I guess, I don't know, but मर्डर में फांसी, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉग्निजिबल क्राइम, इट्स अ हीनियस क्राइम. तो मर्डर किया है तो फांसी, या फिर कोई कोई भी केस है ऐसा सॉर्ट ऑफ, तो उसमें क्या होगा कि जज डिसाइड करेगा कि उसे कितने साल की उसको जेल होनी चाहिए. So what is a fair trial? And as you know, cognizable crime is a very heinous crime. बहुत ज़्यादा heinous crime होता है. So what is fair trial? अब fair trial का क्या मतलब होता है? Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. What if the court did not give a copy of the charge sheet and the statements of the witnesses to Shanti? What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? What if he did not give Shanti's lawyer, advocate Roy, enough time to question the witnesses of the prosecution, such as Mrs. Shinde, and instead has already decided that Shanti was guilty? If this happened, the trial would have been an unfair one. See, here are my case papers. ये जैसे हमने पढ़ा था. तो अब हम फेयर ट्रायल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना. फेयर ट्रायल नीड्स टू बी इम्पार्शियल, बिना किसी भेदभाव के. अगर सोचो, जज सोचता कि शांति तो गरीब है, मोस्ट प्रोबेबली शी हैज़ स्टोलन. अगर शांति गरीब है, शी इज़ अ हाउस वर्कर, मोस्ट प्रोबेबली शी हैज़ स्टोलन. बस ये सोच के कि वो गरीब है, शी इज़ पुअर बिकॉज ऑफ अ पॉवर्टी, शी हैज़ स्टोलन गोल्ड चेन ऑफ रुपीज़ 10,000. So what was it? Fair trial? No, it wasn't. What if the charge sheet was not presented before Shanti, who was the accused? As we know, there is a law that the charge sheet should be presented before the accused. But क्या होता कि ऐसा नहीं होता, right? क्या होता कि क्या होता तो अगर उसके सामने वो चार्ज शीट प्रेजेंट नहीं की जाती, क्या होता कि जो स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस ने बनाई है वो नहीं प्रेजेंट की जाती शांति के सामने. क्या होता कि जो ट्रायल था वो बिना शांति की प्रेजेंस में, बिना सुशील के, शांति के भाई के प्रेजेंस में जो ट्रायल था वो हेल्ड हो जाता, एंड जज ने डिसीजन भी दे दिया होता, इन एब्सेंस ऑफ शांति एंड सुशील. क्या होता कि अगर शांति की लॉयर एडवोकेट कमला रॉय जो थी डिफेंस लॉयर, उनको इनफ टाइम नहीं मिलता शांति को प्रूफ करने के लिए और क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, इंटेरोगेट करने के लिए मिसेस शिंदे एंड मिस्टर शिंदे को. सो वॉज इट फेयर? डेफिनेटली नॉट फेयर. देखो, जो जज होता है उसको दोनों जगह से दोनों बातों को उसको सुनना पड़ता है, ठीक है. उसे इस वाली पार्टी का भी सुनना होता है, उसे इस वाली पार्टी का भी सुनना होता है. सी, सपोज दिस इज अ प्रोसिक्यूटर, ठीक है, एंड दिस इज अ डिफेंस लॉयर. नाउ दे आर फाइटिंग. तो प्रोसिक्यूटर क्या करता है, वो बहुत सारे एविडेंसेस, ही प्रेजेंट्स many evidences again and to prove that Shanti is guilty. The defense lawyer would then speak back that no, Shanti isn't guilty. These are some cases, these are some evidences that proves that Shanti is innocent. But what if judge was being very partial? He was being not fair. He was just supporting this person who is public prosecutor. He was not listening to this defense lawyer. वो बस बोल रहे थे, ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला है ही इज़ डेफिनेटली राइट, ठीक है. So, चाहे वो पर्सन अक्यूज ही इज़ गिल्टी, रिगार्डलेस ऑफ दैट, स्टिल द जज नीड्स टू बी पार्शियल. उन्हें दोनों जगह से बातें सुननी होती है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो अक्यूज का डिफेंस लॉयर हो, राइट. एंड देन ओनली वी कैन से द ट्रायल इज़ फेयर. This is because for a trial to be fair, several different procedures have to be observed. Article 21 of the Constitution that guarantees that right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure.
A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. Let us now return to Shanti's case as described in the trial of the storyboard and identify the essential elements of a fair trial. See, firstly, Shanti was given. अब देखो, हाँ, पहले हमें पढ़ना है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं जो हमें गारंटी करती है. राइट टू लाइफ. It states that it is a person's liberty that cannot be taken away, right? And Article 21 of the Constitution is also upheld. See, firstly, Shanti was given a copy of the charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her. Shanti was charged with the offense of theft that was defined as a crime in law. The trial was held in an open court in public view. Her brother Sushil could attend the court hearings. The trial was held in the presence of the accused. Shanti was defended by a lawyer. Shanti's lawyer, Advocate Kamla Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in Shanti's defense. Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was his responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. तो अब ये जो है, ये सारा जो उन्होंने बताया, ये है फेयर ट्रायल. दिस इज हाउ अ ट्रायल शुड बी अपहेल्ड. पहली बात, शांति को सारे जो की एविडेंसेस थे उनको उसके सामने प्रेजेंट किए गए. जो चार्जशीट थी वो भी प्रेजेंट की गई. जो स्टेटमेंट्स विटनेसेस ने बनाई थी वो भी प्रेजेंट की गई. सेकेंडली, जो ट्रायल था वो ओपन कोर्ट में हेल्ड किया था. ओपन कोर्ट मतलब जहाँ पर सारे लोग हों इन public view, and where Sushil is also present there and in the trial, and Shanti is also present. Shanti perhaps is also defended by a lawyer because as we know, Article 39A ensures that Article 39A ensures that if this person could not hire a lawyer, the state needs to provide. And Shanti's lawyer, Advocate Roy, was also given an opportunity to cross-question, मतलब interrogate the people, the witnesses against opposing Shanti, right? See, हाँ, भले ही जो पुलिस थी उसने के जो थेफ्ट का केस था वो शांति के अगेंस्ट उन्होंने चार्ज कर लिया था. दे फाइल्ड इट. ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर SI राव थे उन्होंने उसके अगेंस्ट फाइल कर लिया था ये केस. बट जज ने सारा सुना और उनको बहुत सारे एविडेंसेस के हिसाब से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया. मतलब ही डिसाइडेड दैट यस, शांति इज़ टू बी इनोसेंट. और जो प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शांति को गिल्टी प्रूफ करने के लिए, उसमें वो हार गए क्योंकि शांति तो गिल्टी थी ही नहीं समहाउ. एंड ही प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर था, ही वॉज नॉट एबल टू प्रूफ दैट शांति इज गिल्टी. सी, इट इज सिग्निफिकेंट दैट द जज decided the matter only on the basis of the evidence before the court. The judge did not jump to the conclusion that Shanti was a thief just because she was a poor maid servant. Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed some young men and not Shanti was the thief, he set Shanti free. In Shanti's case, justice was finally done to her because she was given a fair trial. So this is a very 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 important line here कि हाँ, शांति के केस में सारी एविडेंस, ये जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी उनके सामने एविडेंसेस पेश किए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको वर्क करना होता है. इट्स नॉट दैट कि मे बी ही जस्ट अज्यूम्ड दैट शांति इज गिल्टी जस्ट बिकॉज शी इज़ अ पुअर मेड सर्वेंट. रादर he heard all the evidence, he saw all the evidences which was presented in front of them. He heard both the witnesses of the accused and of the of Mr. and Mrs. Shinde, and then he decided. Rather, he was impartial to both of them, and this is how fair trial was held, right? See, the Constitution and the law both state that the Constitution and law both states that all the persons
that we have discussed in this chapter should carry on their own roles in a proper manner, what this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious, and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. The rule of law, which makes that everyone is equal before the law, should would not make such sense if every citizen was not guaranteed a fair trial by the Constitution. So, I guess yeah. With this we have completed the chapter. Nice. तो मैं आपको एक फाइनल रिकैप्चुलेशन दे देती हूँ. तो सबसे पहले हमने शांति का केस देखा जहाँ पर मिसेस एंड मिसेस शिंदे पार्टी में जा रही होती है. उनको दिखता है कि उनकी गोल्ड चेन चोरी हो जाती है और उनको ऑटोमेटिकली लगता है कि शांति ने उनकी गोल्ड चेन चुराई है 10,000 की. तो मिस्टर शिंदे क्या करते हैं, ही गोज़ टू लॉज एन FIR अगेंस्ट शांति एंड सब इंस्पेक्टर SI राव उनकी FIR ले भी लेते हैं और वो सुशील को पीटने लगते हैं. सुशील शांति के भाई को पीटने लगते हैं और बिना किसी प्रूफ के, और वो दे ट्राई टू मेक हिम कन्फेस. सुशील को वो ट्राई करते हैं कन्फेशन करवाना कि हाँ उसने शांति और जो वो है वो एक गैंग चलाते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स की और वही चुराते हैं सारी ज्वेलरी फ्रॉम द हाउस. बट फाइनली शांति क्या होता है, शांति के साथ वो अब टेंशन में आ जाती है. शी स्टार्ट्स टू वरी दैट वेयर विल शी गेट अ लॉयर फ्रॉम. तो आर्टिकल 22 के हिसाब से वेरी इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 22 के हिसाब से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर. एंड आर्टिकल 39A के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की ये ड्यूटी है कि जो पर्सन एक लॉयर इंगेज नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और डिसेबिलिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोवाइड करेगा एक लॉयर. तो एडवोकेट कमला रॉय सारे एविडेंस देकर प्रूफ करवा देती है कि शांति इनोसेंट है और जज भी ट्रायल इम्पार्शली हेल्ड करते हैं. और हमने पढ़ा कि इसमें 4 इम्पॉर्टेंट पीपल हैं, पुलिस, जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर. मेक अ स्टार हेयर, एक्चुअली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. और हमने पढ़ा कि पुलिस का रोल क्या है, वो FIR लॉज इन करते हैं, वो चार्जशीट बताते हैं, वो पकड़ते हैं किसको, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और उसके हिसाब से फिर वो पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम. ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि जब आर्टिकल 22 के हिसाब से कि जब एक बंदा अरेस्ट होता है उसको पहले बता देना चाहिए कि आप वाई यू हैव बीन अरेस्टेड. सेकेंडली, he has a right to be presented before the magistrate within 24 hours, or he has also a right not to be ill-treated, not to be tortured during custody or arrest, and confessions made in the police custody cannot be used as an evidence against the accused. अगर उसने confession बना ली and maybe the police has physically abused him or forced him to sign the confession, so that is not taken as evidence in the court. एंड बॉय अंडर 15 years of age या फिर गर्ल अंडर 15 years of age या फिर एक औरत को ये कैनॉट बी जस्ट कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर ओनली क्वेश्चनिंग. और डी के बासु गाइडलाइंस के हिसाब से हमने ये भी पढ़ा कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स दे कैरी आउट अरेस्ट, दे नीड टू वेयर देयर नेम टैग्स एंड आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स. And a memo of the arrest should be also prepared, and a person who is arrested, he has a right to inform his family member or relative or whosoever, guardian, whatever. And if a person is living, if his family, friend, relative is living outside the district, the police informs the person where the custody is being taken place, the venue of the custody, and the time he is being arrested, what crime he has committed, his friend or family member. मतलब कि फैमिली मेम्बर को ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हमने आपके इस फ्रेंड को या फिर इस फैमिली मेम्बर को अरेस्ट कर दिया है विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर द अरेस्ट. हमने फिर पढ़ा FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सबसे पहले विटनेस देता है, जो जिसने क्राइम के बारे में सुना होता है, जिसने क्राइम को देखा होता है. और कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि बहुत ही हीनियस क्राइम. हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर होता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को. और जब क्राइम कमिट होता है, इट इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम रादर देन द होल सोसाइटी. जज का रोल होता है ये मतलब कि ये डिसाइड करना कि वेदर अ पर्सन इज़ इनोसेंट और गिल्टी. उसके हिसाब से वो उसे सज़ा
सुनाते हैं, उनके सामने पेश करते हैं। फेयर ट्रायल यानी कि जस्टिस के साथ ट्रायल होना चाहिए, ठीक है, और सबके साथ इम्पार्शलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जज एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहा है एंड ही इज़ अगेंस्ट द डिफरेंट पार्टी। सो यही था इस पूरे चैप्टर में। इट वॉज प्रीटी एक्चुअली इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर and I hope you understood by my explaining. So if you enjoyed the video, like, share and subscribe to my channel. And yes, don't forget to press the bell icon so that you can get notifications whenever I upload a new video. So stay safe, stay healthy. Bye bye.